All the information shared in this video is available on the public platform. Nothing is discussed here which may breach the confidentiality of our armed forces. Defense Detective respects our defense forces and works only on the information that is available for public use. भीख मांगकर खाने वाले पाकिस्तान को हर साल 227 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का चूना उसी की आर्मी, कस्टम और पुलिस लगाती है। पाकिस्तान की कंगाली किसी से छुपी नहीं है। आईएमएफ और चीन से लेकर अरब कंट्रीज के आगे पाकिस्तान हाथ फैलाकर खड़ा है। आईएमएफ ने अभी हाल ही में पाकिस्तान को लोन की 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की किस्त भी जारी की है। वहीं दूसरी तरफ 1-2 साल से नहीं, पिछले 15-20 सालों से लगातार पाकिस्तान के रेवेन्यू को चपत लगाने का खेल खुल्लम खुल्ला चल रहा है और पाकिस्तान की किसी सरकार में इतना दम नहीं है कि वो इस खेल को रोक सके। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान के उस संकट की जिसने आईएमएफ के सामने भी खतरे की घंटी बजा दी है। जिस खतरे की मैं बात कर रहा हूं वो खतरा पाकिस्तान की इकोनॉमी में छेद नहीं बल्कि इतना बड़ा सुराख है जो पाकिस्तान के खजाने को खाली किए जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान चाहे कितना भी जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, वो इस सुराख को कभी भर नहीं सकता। The oil smuggling is draining Pakistan's economy. Today's news in Pakistan's newspapers, Dawn's report, is the crisis I am talking about. This crisis is the smuggling of petrol diesel from Iran. Dawn's report indicates that after the elections, there has been an increase in the influx of oil from Iran. Friends, the smuggling of oil from Iran in Pakistan is the crisis that is hollowing out Pakistan's economy. You would be astonished to know that every year, Pakistan suffers a loss of 227 billion Pakistani rupees due to oil smuggling from Iran. This is a significant amount in itself. And for Pakistan, which is on the brink of poverty, it's nothing less than oxygen. But this amount is not going into Pakistan's treasury. Instead, it's finding its way into the pockets of a few privileged individuals. The data on Iranian oil smuggling in Pakistan would surprise anyone. Dawn's report reveals that every year, 2.8 billion liters of oil are smuggled from Iran to Pakistan. Usually, more than 10 million liters of diesel and petrol are brought from Iran to Pakistan daily, and it's openly sold in the market. है ना चौंकाने वाली बात। भारत में पाकिस्तान के रास्ते ड्रग्स भेजे जाते हैं, हथियार भेजे जाते हैं, लेकिन ये भी बहुत कम मात्रा में होते हैं और चोरी छिपे भेजे जाते हैं। इस तस्करी के खिलाफ भी बीएसएफ और इंडियन आर्मी लगातार एक्शन लेती रहती है। आए दिन इनका क्वाडकॉप्टर और ड्रोन्स मार के गिराए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हर दिन 10 मिलियन लीटर तेल ईरान से स्मगल करके, यानी कि तस्करी करके पाकिस्तान लाया जा रहा है और सिक्योरिटी एजेंसीज को पता नहीं चल रहा है। यह भला कैसे हो सकता है? Please watch this video. This is the place in Iran from where oil is supplied to Pakistan. The trucks you see here are loaded with drums filled with oil, which are then transported to Pakistan. Will you be able to count these trucks? Oh sir, you might tire from counting, but you won't be able to count the trucks. All these trucks have arrived to load oil from Iran. In an investigative report by the Pakistani government on oil smuggling from Iran, it was revealed that every day, pay attention friends, every day 27,000 trucks go to Iran for oil smuggling, and then they return loaded with oil to Pakistan. And approximately 3,500 liters of oil are loaded on each truck. दोस्तों, अब मुझे एक बात बताइए, एक दो छोड़िए, 50-100 की भी बात मत कीजिए। 27,000 गाड़ियां ईरान से तेल लेकर सिक्योरिटी एजेंसीज, बॉर्डर पर लगी फोर्स और कस्टम को बिना पता लगे पाकिस्तान में एंटर कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं, ये किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है। यानी इस तस्करी में सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग भी शामिल हैं। उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि ईरान तेल की तस्करी से कैसे पाकिस्तान की ऑयल कंपनी से लेकर आईएमएफ तक के पसीने छूट रहे हैं। The Pakistani newspaper reports today's news, dated 19th September 2023,
stating that the IMF has requested a report on the oil brought into Pakistan through smuggling. Along with this, the IMF had also expressed serious concerns about this smuggling. The news states that approximately 120,000 tons of oil are smuggled into Pakistan every month. This results in a loss of 10 billion Pakistani rupees in customs duties and levies every month. The Express Tribune also published a similar news story. It mentioned that the IMF is very concerned about the revenue loss due to fuel smuggling. Meanwhile, Pakistani oil companies are also benefiting from this smuggling. Watch this news from Dawn. It is written that Pakistan's oil industry has sent an emergency message regarding the oil brought in through smuggling from Iran. The three major petroleum stakeholders in Pakistan are appealing to the Pakistani government continuously to stop this smuggling. More than 3 dozen refineries in Pakistan are writing letters almost daily to Pakistan's Petroleum Division and the Oil and Gas Regulatory Authority, urging them to take action against this smuggling. पाकिस्तान ने पिछले साल के आखिर तक ईरान से तेल की तस्करी के खिलाफ एक्शन लिया था। एक कमेटी बनाई थी, रिपोर्ट मंगवाई थी, कई जगह ईरान से लाए गए तेल को पकड़ा भी गया था, लेकिन वो कार्रवाई केवल और केवल दिखावा भर थी। बताता हूं कैसे। असल में पाकिस्तान को ईरानी तेल की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई IMF के दबाव में करनी पड़ी थी। Under pressure from the IMF, Pakistan's puppet government, as well as the government led by the unelected PM Anwarul Haq Kakar, formed a committee and requested a report on the smuggling of Iranian oil. Last year, in September, the committee submitted this report to Kakar. At that time, the Pakistani caretaker PM had declared it a threat to existence. Orders were given to take action to stop all smuggling from Iran. Security forces in many places had also seized the oil brought from Iran. Earlier, it was claimed that Baloch fighters were behind the oil smuggling from Iran. But in the investigation last year, it was revealed that many Pakistani leaders and officers are involved in this Iranian oil game. Dr. Dawn's report reveals the names of about 100 such people. The investigation report on oil smuggling was published in the Business Recorder on 11th September 2023. It is mentioned that 90 government officials and 29 politicians were involved in this smuggling. The report states that approximately 285 billion Pakistani rupees are given to Iranian dealers for oil smuggling every year. In this oil game, 722 currency dealers are also involved who work for money exchange. This work is done through Hawala. That is, all these 722 currency dealers are actually Hawala traders. Of these, 205 operate in Punjab, 183 in Khyber Pakhtunkhwa, and 176 in Sindh. Along with Balochistan and Pakistan-occupied Kashmir, there are also 17 Hawala traders in the Pakistani capital Islamabad who are involved in oil smuggling from Iran. Pakistani newspaper The Express Tribune has published a report on oil smuggling from Iran today. The headline reads, "Oil smugglers, officials connive," meaning officials themselves are encouraging oil smugglers, providing protection. It is mentioned that 533 petrol pumps in Pakistan are connected to this smuggling. It also writes a startling fact that after Shehbaz Sharif's government came to power in March, petroleum products smuggling from Iran doubled. एक्चुअली गलती शहबाज शरीफ और उनकी गवर्नमेंट की नहीं है। हुआ ये था कि तस्करी तो पहले भी इतनी होती रहती थी, बस पिछले साल IMF से लोन लेने के चक्कर में थोड़ी बहुत कार्रवाई करनी पड़ी और तेल की तस्करी कम हो गई थी, जो अब फिर से उसी ट्रैक पर आ गई है क्योंकि पैसे वापस आ गए हैं। अब दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ईरान से तेल की तस्करी पर एक्शन क्यों नहीं लेता। उसके पीछे एक ऐसा नाम है जिसके आगे शहबाज शरीफ तो क्या, पाकिस्तान का कोई नेता कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं रखता। This is Major General Faisal Nasir of the Pakistani Army. In Pakistan,
People know Faisal Nasir by the name Dirty Harry in the counter-intelligence wing of the ISI. You might remember that Imran Khan accused a senior military officer of conspiring against him last year. That Dirty Harry is the same officer. So the accusation is that the entire network of all smuggling from Iran belongs to Major General Faisal Nasir. Many people on Twitter have openly called Faisal Nasir the mastermind of this smuggling. However, such a large-scale all smuggling from Iran cannot happen without the involvement of the Pakistani army. Pakistani political scientist and YouTuber Syed Muzammil had clearly blamed the Pakistani army for this smuggling. देखे ना, वो जो कारोबार चल रहा है वहाँ पे, उसका बेनिफिशियरी कौन है? आम बलोच तो खड़ा ही नहीं हुआ बॉर्डर पे। तो वो पापा जॉन साहब जो थे, उनकी नेटवर्क कैसे बनी थी सारी? वो देखें ना, ये चीज़ें बड़ी एविडेंट होती हैं। ईरानी डीजल भी ऐसी है कि वो बाइकों पे आता है पहाड़ियों से, हाँ, और वो आधी रात को ट्रैवल करते हैं। अब माशाल्लाह कस्टम के हालात ये हैं कि कस्टम 5 बजे पोस्ट बंद करके घर चली जाती है। ये इसी तरह की जंग लगी हुई है, फौजी कह रहा है मेरा 9 to 5 हो गया, मैं जा रहा हूँ। ये सीन बनाया हुआ है बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब 5 बजे के बाद ट्रक गुजर जाता है। अब जब पाकिस्तान की आर्मी इस तस्करी में इन्वॉल्व है, डर्टी हैरी और पापा जोन्स की जेब में इसका पैसा जा रहा हो, तो भला इमरान, काकड़ और शहबाज की औकात क्या है? औकात है कि वो इस तस्करी को रोक सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता। अब आपको ग्वादर का एक वीडियो दिखाता हूं। ये ग्वादर पोर्ट का वीडियो है। अब आप इसे देखिए और समझिए सारा खेल। ये मैं देख रहा हूँ गरीबों का जो फ्यूल है, ये तमाम गरीब मजदूरों से या के बलोच मजदूरों से जाकर के फिर बेचेंगे, जाके अपने बच्चों को खिलाएंगे, खुद अरबपति बनेंगे। खुद मैं बतौर एमपीए कह रहा हूँ, कोस्ट गार्ड बलोच दुश्मन है। बतौर एमपीए यहाँ का नुमाइंदा कह रहा हूँ कि कोस्ट गार्ड बलोच दुश्मनी पे उतर आया है। उनके रग और खून में बलोच दुश्मनी है, रग और खून में। हमारा बच्चा जो है ना बेरोजगार, 2 लीटर तेल के लिए इनके बिल्कुल ऐसे खड़े हैं जैसे कश्मीर फतह कर रहे हैं। Have you heard? Members of the Balochistan Provincial Assembly, Hidayat-ur-Rahman Baloch, are accusing that Baloch people are being targeted by security forces who themselves will sell Iranian oil seized from Balochis. Indeed, Balochis are easy prey for these security forces. Whenever action is taken against Iranian oil smuggling, Balochis are targeted. It's also true that Balochis are heavily involved in Iranian oil smuggling. This smuggling mainly happens from Balochistan itself. A report was published in Nikkei Asia in 2021, stating that Iranian oil smuggling is a major failure of CPEC, the China-Pakistan Economic Corridor. The claim was made that CPEC would provide employment to the Balochis, but most of the work went to Chinese citizens. The Balochis were left empty-handed. So, thousands of Baloch families are earning their livelihood from this oil smuggling. The report indicates that 2.2 million people are directly involved in this smuggling. तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ही पाकिस्तान को कंगाल बनाने में जुटी हैं और इसका असर वहां के आम आदमी पर पड़ रहा है। वो बेचारा मर रहा है महंगाई से। ईरान से लाखों लाख लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में अवैध रूप से लाया जा रहा है और पाकिस्तानी रेवेन्यू को चूना लगाया जा रहा है। अब जब ईमान, कलमे और इस्लाम की बात करने वाले पाकिस्तान की आर्मी ही पाकिस्तान को डुबोने पर तुली हुई है, तो भला कौन सी ताकत उसे बचाने वाली है? तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे पाकिस्तान की तेल चोर आर्मी के बारे में पूरी दुनिया को पता चले। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकॉन दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी, हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जल्दी मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।